Hello guys, I am Shubham of tutorials. In this video we will do plasma membrane. Okay, so plasma membrane आज हम देखेंगे इस वीडियो में and plasma membrane बहुत important and vast topic है to study. Okay, so we will divide it, right? So plasma membrane, as we know, it is a lipid bilayer. Okay, lipid bilayer. Then fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. Okay, let's see the picture. Picture से हम देखेंगे lipid bilayer means like a sandwich type. Okay, see lipid bilayer 5 mm thickness, right? See like this. एक सिंगल लिपिड जो होता है, जो हेड है, दिस इज अ हेड एंड दिस इज अ टेल, राइट? सो हेड इज हाइड्रोफिलिक, head is hydrophilic and tail is hydrophobic. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, मतलब यहाँ से वाटर इंटरैक्ट कर सकता है ऊपर एंड नीचे से. ओके, वाटर, बट इट कैन नॉट क्रॉस इनसाइड द मेम्ब्रेन, कैनॉट गो इनसाइड, राइट? बिकॉज अंदर हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है. हाइड्रोफोबिक इज वाटर हेटिंग एंड लिपिड लविंग. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दैट हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड लिपिड हेटिंग, और इसका उल्टा होगा हाइड्रोफोबिक केस में, राइट? सी वन मोर डायग्राम ऑफ दिस लिपिड बाइलेयर. हाइड्रोफिलिक, ऊपर हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है, वाटर इंटरैक्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड पोलर. हाइड्रोफिलिक इज आल्सो कॉल्ड पोलर एंड हाइड्रोफोबिक जो इंटरनल है दैट इज नॉन पोलर. दिस इज अ बेसिक थिंग एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, very important hai in cell signaling also, as we go further, right? This is very important, this is the basic of cell biology. The single phospholipid is shown here. Okay, when I say lipid bilayer, so lipid is basically a phospholipid. Phospholipid का bilayer arrangement होता है, and यहाँ पे हमें डायग्राम दिख रहा है, this is a head and this is a tail. एक टेल स्ट्रेट है एंड एक टेल ऐसा इनवर्स है, राइट? लाइक वॉकिंग मूवमेंट. ओके, so this is because of double bond. See यहाँ पे double bond होता है and that gives this shape for a lipid. Okay, so basically this is a saturated fatty acid. Saturated means no double bond, and this is a unsaturated fatty acid which is having a double bond, right? And see, this is a polar, as I said, polar is hydrophilic head. जो हेड ग्रुप है हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग होता है, मींस पोलर होता है, एंड जो टेल है दैट इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक. ओके, इसीलिए ये वाटर से इंटरैक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए अंदर होता है इंटरनल साइड, एंड ऊपर हेड होते हैं टू इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट, राइट? so thus this is a sandwich type. जैसा ऊपर ब्रेड होता है एंड बीच में वेजीज होते हैं, राइट? So same we can resemble, this is a head on the two ends and बीच में tails, right? Like this. So ये hydrophilic and ये hydrophobic. I will write here HPHL philic. Okay, this is very important. और जो head है, head glycerol, phosphate and choline.
दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन, बेसिकली फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल अटैच होता है, राइट। फॉस्फोलिपिड होगा तो फॉस्फेट लिंक टू ग्लिसरॉल, एंड कोलिन है, कोलिन तो कोलिन यहाँ पे अटैच होगा फॉस्फेट के ऊपर। गॉट इट। जो फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर, दिस इज नोन एज क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, राइट। क्वासी फ्लूइड मीन्स जेल लाइक, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइडिटी, ओके। एंड फोर्सेस एंड बॉन्ड्स, सी यहाँ पे जो बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर नॉन कोवैलेंट, ओके, नॉन कोवैलेंट, एंड उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, दिस आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल, ओके। एंड उसके बाद दूसरे वाले जैसे कि वंडर वॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, okay, but major responsible is the hydrophobic interactions. Got it? RBC, red blood cell, was used as a model to study about the plasma membrane. RBC को as a model use किया था to study about plasma membrane in detail, right? Its behavior inside the body as well as outside the body, right? While preparing cultures, etc. Okay, next point is about the asymmetry. Asymmetry. See, these are the characteristics. Okay, characteristics है ये plasma membrane का. So asymmetry means what? Asymmetry is unequal distribution of lipids. जो lipids होते हैं, that is unequally distribution. मतलब two leaflets है, okay, and in both the leaflets there is unequal distribution of lipids. Unequal distribution of lipids on both leaflets. This is asymmetry, right? Next is the arrangement. Arrangements. Arrangements में first of all lipid bilayer as we saw now. Okay. Then micelles, liposomes, and lipid raft. Okay, lipid raft. So lipid bilayer is the commonest as we saw. और हम इसके बारे में तो डिटेल में स्टडी करेंगे ही लिपिड बाइलेयर, बट वी वांट टू नो दिस अदर आल्सो, micelles, liposomes and lipid rafts also, right? So lipid raft also we will discuss in detail, right? But micelle and liposome क्या होता है? Let's see. See, this is a micelle arrangement. In aqueous environment, we see this type of arrangement. जब हम लिपिड को aqueous environment में रखेंगे. In the micelle arrangement, single fatty acid tail है. We can see from the picture, and lipid bilayer में two fatty acid tails है. बस यही डिफरेंस है इसमें, right? This is a single fatty acid tail and lipid bilayer में two fatty acid tails होती है. So this is a micelle arrangement. We can see here. अगर हमने water condition में immerse किया लिपिड को, तो micelle arrangement में circularization हमें दिखता है. Okay, all the things like in the circular format ऐसे फॉर्म होगा एक micelle, right? As we can see in the picture as well. And
टेल्स जो होंगे इंटरनल साइड पर इससे अरेंज हो जाएंगे। Okay, so now what is the difference between लिपोसोम एंड मिसल? So this is a लिपोसोम, ये लिपोसोम है। लिपोसोम सेम मिसल ही है बट इसमें 2 फैटी एसिड टेल्स है। Okay, so this is a लिपोसोम, राइट? जो लिपिड बाइलेयर है उसका ही लिपोसोम फॉर्मेशन होता है, दैट वी कैन से, एंड दिस इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। हम ये लैब में भी बना सकते हैं एंड इसे हम यूज करते हैं टू ड्रग डिलीवरी। ओके, दिस कैन बी यूज इन ड्रग डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग डिलीवरी एज वेल एज जेनेटिक्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो लिपोसोम में हम जीन इंसर्ट करके वी डिलीवर इट। ओके, वी कैन डिलीवर। वन मोर पिक्चर ऑफ द अरेंजमेंट, सी वेरी नाइस पिक्चर, ये लिपिड बाइलेयर है। ओके, देन दिस इज अ मिसल, दिस इज अ लिपोसोम। ओके, मिसल में सिंगल फैटी एसिड टेल, लिपोसोम में 2 फैटी एसिड टेल्स। ओके, दिस इज अ लिपिड बाइलेयर का ही हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, राइट? 2 फैटी एसिड टेल्स, यहाँ पे सिंगल फैटी एसिड टेल, एंड जो नेक्स्ट ये अरेंजमेंट है, दिस इज अ क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक फेस अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट भी होती है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्यूबिक अरेंजमेंट। Okay, so this is about the arrangement, right? Now the next point is constituents, or we can say composition of plasma membrane. As we are seeing always, lipid bilayer, lipid bilayer. So इसमें तो पहले लिपिड होगा, बहुत लिपिड मतलब फैट, राइट? लिपिड, देन कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, मतलब लिपिड्स में भी टाइप्स होते हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स में भी, में प्रोटीन्स में भी। सो वी विल डिस्कस दिस कंपोजिशन इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? नाउ लेट्स सी सम फंक्शंस। फंक्शंस में फर्स्ट क्या रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, राइट? एक सेल दूसरे सेल से डिवाइड होता है, व्हाट वी कैन से सेपरेट दिखती है हमें, राइट? एज वेल एज सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन होती है, राइट? दैट इज आल्सो वी कैन से इट फॉर्म्स लाइक अ कंपार्टमेंट, proper organized structure we can say. Then next point is scaffold for biochemical activities. Next important thing is selectively permeable. Selectively permeable होते हैं, right? मतलब not every molecule can pass through the membrane. Okay, सब molecule enter या exit नहीं कर सकते, कुछ ही molecules enter कर सकते हैं, and that is selected by the membrane itself, right? So basically this will be the characteristic
कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा ये, सिलेक्टिवली परमिएबल और वी कैन से सेमी परमिएबल। Means what? Not all the molecules can pass through the membrane. Okay. Next point is transport. Transport. Transport of molecules. Transport के लिए responsible है plasma membrane. Then cell-cell communication. मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल, राइट। एनर्जी ट्रांसडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक वी कैन से ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस देखे of the plasma membrane thing. From the next video, we will see the detail, right, of lipids, then dynamics of the plasma membrane we will be discussing. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Share this video with your friends. Like this video, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.